गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड आई एम योर इंग्लिश गुरु। सेशन शुरू करते हैं आज का सेशन टॉप 100 एरर डिटेक्शन। जो लास्ट टाइम जितना हो गया था उसको आगे प्रोसीड करेंगे। एंड वंस अगेन आज दूसरे इंग्लिश गुरु नहीं है, आप उन्हें मिस जरूर कर रहे होंगे, हम भी मिस कर रहे हैं। कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप देख रहे थे कल भी, तो आज नहीं, लेकिन हाँ यस श्योरली फिर से वो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वी हैव वंस अगेन मेनी क्वेश्चंस हियर टू डिस्कस राइट नाउ। लेट्स सी योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट इज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैं बता दूं जिन लोगों ने अगर लास्ट सेशन नहीं देखा हो, ये वही न्यू टाइप है। यानी न्यू टाइप इट मींस you have one sentence which is highlighted, and the sentence which is highlighted that doesn't exist any kind of grammatical error. It means जो sentence आपका highlighted है which does not have any kind of grammatical error. The rest of the sentences you are given here, you need to find the answers or the error in that sentences. All right, and your time start now. Hurry up. ओके, टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका है। पढ़ ले रहे हैं, क्या दिया है? चाइना द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट फॉर ई कॉमर्स। चाइना क्या है? दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मार्केट किसके लिए? फॉर ई कॉमर्स, सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक कार्स। इज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर वेंचर कैपिटल। और थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है किसके लिए? वेंचर कैपिटल के लिए। एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, ये किसके लिए? रॉबर्ट्स के लिए। तो अगर हम यहां से देखते हैं शुरू से लेकर एंड तक, तो जिसके लिए हमने फॉर यूज किया, फॉर ई कॉमर्स, फॉर वेंचर कैपिटल, एग्जैक्टली मार्केट्स के बाद रॉबोट से पहले भी हमें यहां क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर robots. That would be a right answer. It means rest of the sentences don't have any kind of error except statement number D that exists the error, that is for आपको यूज करना पड़ेगा instead of the preposition to को हटा के। It means only D would be your right answer and आपको यहाँ for robots लिखना पड़ेगा instead of to robots. And I hope you got it very well. Let's see and move to the next question. Hurry up. Time's up. चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एयर पॉल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एयर पॉल्यूटेंट दैट कॉज एसिड रेन. Here we are talking about sulfur dioxide. It is a singular noun. If it is a singular noun, it means it requires singular verb. हमने आगे देखा that दिया हो which is a relative pronoun. Relative pronoun है, इसके बाद जो verb आएगी इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए. It means air pollutant दिया हुआ तो उसके बाद जो verb आएगी उसमें SODS होना चाहिए. Sulfur dioxide is an air pollutant that causes acid rain, haze and many health related problems. तो पहला error that you found it here, that is in statement number A. It means causes you need to use here. So health related problems and it is produced predominantly, यानी predominantly produce होता है, यानी most frequently, margin में most frequently produce होता है when coal is burning to generate electricity. जब coal को burn किया जाता है, coal को burn किया जाता है, here we require the sentence must be in the passive form. If the sentence must be in the passive form, it means it requires third form of the verb with be verb. Be verb के साथ third form of the verb should be there. It means burning की जगह आपको यहाँ पर burned लिखना पड़ेगा, B-U-R-N-E-D, burned. It means the error lies in statement number A as well as in statement number D. So your correct answer here it is causes and burn. यहां पर मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है, जैसे burn से मेरे दिमाग में एक burned होता है, एक word होता है burnt, B-U-R-N-T, burnt. burnt भी तो लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, दोनों में अंतर है burnt और burned में। जब हम बात करते हैं B-U-R-N-E-D, burn, burn का मतलब किसी को हमने जलाया, जलाकर हमने उसका कुछ पॉजिटिव चीज निकाली, दैट इज बर्न। बर्न करके हमने कुछ भी उसका प्रोड्यूस कर लिया। जैसे कोल इज बर्न, कोल को बर्न किया गया किस चीज के लिए? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली जो बर्न होता है, बर्न का मतलब इट गिव्स यू नेगेटिव सेंस व्हेन वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ हार्म। इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज B-U-R-N-T, बर्न। वहां हम बर्न यूज करते हैं ना, जैसे हमने कहा मेरे हाथ अगर जल गया थोड़ा सा तो इट इज नाउ बर्न्ड, वो बर्न नहीं होगा, है ना। बट मैंने कुछ जला दिया, जलाने के बाद कुछ हो रहा है, यानी उससे कुछ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज बर्न। एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। चलिए, लेट्स सी एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। हरी अप स्टूडेंट्स।
टाइम्स अप। चलिए पढ़ लेते हैं क्या दिया है। द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द रिलीज, द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द रिलीज, रिलीज का ऑर्डर दिया कोर्ट ने, किस चीज से रिलीज, फ्रॉम डिटेंशन, यानी जो कस्टडी है, फ्रॉम डिटेंशन ऑफ 8 ह्यूमन राइट्स activists including Amnesty International director of the country which are on trial, जो कि ट्रायल पे, यहां पर जो बात हो रही है इंटरनेशनल डायरेक्टर है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्संस एंड 8 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, यानी ये भी हम पर्संस की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहां विच की जगह आपको हु लिखना पड़ेगा, हु आर ऑन ट्रायल ओवर कंटेस्टेड टेरर चार्जेस। इट मींस यहां पर बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एरर एक्सेप्ट द ऑप्शन नंबर सी। इट मींस ओनली सी वुड बी योर राइट आंसर। इट मींस विच की जगह आपको हु यूज करना पड़ेगा, दैट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 is absolutely correct here. Most of you have chosen option number 2. That's pretty nice. Okay, कुछ लोग टू रिलीज लिख रहे हैं यहां पर। देखिए, द कोर्ट हैज ऑर्डर टू रिलीज, अगर ऐसा होता तो बिल्कुल सही होता। यहां पर आर्टिकल दा दिया हुआ, इट मींस इट रिक्वायर्स नाउन, और रिलीज आपका नाउन भी होता है। जो वर्ब और नाउन कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन भी होती है, वर्ब भी होती है, इसमें से रिलीज आपका एक आ गया। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 हरियाणा। Alright, time's up. समय खत्म हो चुका है। पढ़ ले रहे हैं क्या दिया है। The Central Board of Excise and Customs has said its revenue laboratories are being upgraded, यानी Central Board of Excise and Customs ने क्या कहा कि जो इसकी रेवेन्यू लेबोरेटरीज हैं are being upgraded, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। The sentence requires the form must be in the passive form, और ये पैसिव दी भी हुई है। That's why the statement A is absolutely correct here. Are being upgraded and it has been decided, और ऐसा डिसाइड किया गया that field formations may forward samples of goods imported or exported, यानी ये भी पूरी तरीके से करेक्ट है। मे दिया, मे के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए मॉडल वर्ब के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सपोर्टेड टू लैबोरेटरीज फंक्शनिंग अंडर अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, अदर दिया है, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल दिया, यानी कि ऑल ऑफ दी सेंटेंसेस। मैं यहां देख रहा हूं कई लोगों ने फिर चूज भी कर लिया था, बट कुछ लोग थर्ड भी चूज करें, यानी ओनली बी। उन्हें शायद बी में कुछ गलती लग रही थी। बी एब्सोल्युटली करेक्ट, इनफैक्ट नो एरर, देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ एरर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से बता दूं तो बी में बिल्कुल गलती नहीं, क्योंकि हमने देखा आर दिया है, बीइंग दिया है, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, पैसिव की रिक्वायरमेंट है, फिर पैसिव हो गया, आगे भी पैसिव होना चाहिए, इट हैज बीन, थर्ड फॉर्म, फिर पैसिव क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, ऑलराइट, सो बी में कोई गलती नहीं है, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, इट्स नो एरर बाय द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, हरी अप। Alright, time's up. समय खत्म हो चुका। पढ़ लेते हैं क्या दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैव बीन इन्वेंटेड इन द वेस्ट, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है वो इन्वेंट हुई है वेस्ट में, बट यू कैन सी इट्स फ्यूचर, जो इसका आप देख सकते हैं, जो इसका फ्यूचर है टेकिंग शेप, वो शेप ले रहा है ऑन अदर साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अदर साइड्स में। When we talk about it is making a shape, it is creating a shape, or it is taking a shape. In which part? इन विच पार्ट, जिस पार्ट में होगा उस पार्ट का नेम दिया होगा। हम हमेशा ही पूछते हैं इन विच पार्ट, नॉट ऑन विच पार्ट। दैट्स व्हाई हमें लिखना पड़ेगा इन दी अदर साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट दी ऑन दी अदर साइड्स ऑफ द वर्ल्ड। यहां ऑप्शन नंबर 2 कई लोगों ने ए और डी चूज किया, ए और डी, में कोई गलती नहीं है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैव बीन इन्वेंटेड, हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेंट किया गया हो, ये पैसिव की रिक्वायरमेंट हो रही है, किसी के द्वारा ही तो रिक्वायरमेंट हो रही, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो डी में तो कोई गलती नहीं है ना, अदर साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, यहां पे इन दी अदर साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ऑन दी अदर साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यहां पर हमने देखा ऑन दी अदर साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कई लोगों ने 444 यहां चूज किया, दैट्स गुड। इट मींस यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इन दी अदर साइड्स ऑफ द वर्ल्ड व्हेन वी टॉक अबाउट इन इंडिया, इन एशिया, इन वेस्ट एशिया, जैसे यहां पे लिखा इन दी वेस्ट, तो इन दी वेस्ट, इन दी नॉर्थ, इन दी साउथ, तो आपको वहां पर इन यूज करना पड़ेगा, नॉट एनी अदर प्रोपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 61, हरी अप स्टूडेंट्स। Alright, time's up. समय खत्म हो चुका है। इसे पढ़ ले रहे हैं, बट मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला। कॉमन मैन का सबसे पहले आंसर है सर, एडजस्ट करिए देयर को, एडजस्ट
There, all right, common man, that's pretty nice. सबसे पहला आंसर आपने दिया, बहुत अच्छी बात है. पढ़ ले रहे हैं क्या दिया है. एक्टिव इन्वेस्टर्स रेगुलरली ट्रैक कंपनी डिस्क्लोजर्स. जो कंपनी के डिस्क्लोजर्स होते हैं, डिस्क्लोजर्स का मतलब किसी भी चीज को रिवील कर देना, एक तरीके से कोई सीक्रेट, कोई प्लान, दैट इज रिवील. ओके, सो एक्टिव इन्वेस्टर्स जो कि दिया है, विच इज प्लूरल. Active investors regularly track company disclosures and adjust his portfolios. तो his portfolios की जगह आपको लगाना पड़ेगा adjust their portfolios. तो एक्टिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमें कैसे आपको वहां इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में कैसे नहीं, कितना इन्वेस्ट करना है, ऑल दैट. तो इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए, तो इसकी जगह देयर होगा. सो फर्स्ट एरर दैट लाइज इन स्टेटमेंट नंबर ए दैट यू गॉट इट हियर, दैट इज यू नीड टू यूज THEI देयर इंस्टेड ऑफ हिज. So their portfolios, depending on the nature and substance of announcements, as disclosures are often price sensitive and insiders are always in a better position to make bigger trading gains. We don't find any kind of error in any other sentences in the except option number A, that is his. It means only A, option number 3 would be your right answer. नील भारद्वाज जी कह रहे हैं सर पहले मैंने बताया था. नील भारद्वाज जी पहले आपने बताया था. आई एम गिविंग यू अ ग्रेट क्लैप, हाउस लॉडेबल अपलॉज फॉर यू. ऑलराइट, चलिए, वेरी गुड, सबको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है. क्वेश्चन नंबर 62 तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहले आंसर कौन देगा. हरिया. टाइम्स अप. अब शुभम जी का सबसे पहले आंसर आया, हंड्रेड्स इन्होंने लिखा. ओके, पढ़ते हैं. चाइना गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू pour 100 of billions of yuan. जो अपनी वो करेंसी की बात कर रही है वो, यानी कि चाइना गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू pour 100 of billions of yuan. तो इन जनरल केसेस व्हाट डू? वी डू नॉट ऐड एनी काइंड ऑफ एस और एस विद वर्ड्स लाइक 100, million, trillion, thousand, like that, like such kind of words we do not use as or yes in a general case. In fact, in a general case, when we talk about, if we use any kind of digit before that, like अगर हम use कर रहे हैं 200, तो हमें s नहीं लगाना पड़ेगा. 200 would be the right answer. 300 would be the right answer. But अगर हम वहीं वहां पर off लगा दें, 200s of anything else, 2000s of anything else, तो ऑफ लगा होगा. दैट्स व्हाई आपको यहाँ एस लगाना पड़ेगा. दैट्स प्रीटी नाइस. लाइक शुभम जी ने चूज किया था, हंड्रेड्स होगा बिल्कुल. तो चाइना गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू pour hundreds of billions of yuan into the technology in coming years, and companies are investing heavily in nurturing and developing AI, that is artificial intelligence talent. It means option number A, option number 1 would be your right answer here, and this is your answer, that is 100%. And I hope you got it very well. Let's see, move to the next question, number 63. टाइम्स अप. बट मैं आंसर देख लूं पहले, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का. 1 ओनली सी. ओके, पार्लियामेंट किसी ने बोला, बिबास जी ने. प्रियंका जी 1. मैं देख रहा हूं, नो एरर किसी ने कहा, लेकिन पार्लियामेंट कई लोगों ने पकड़ लिया. पार्लियामेंट, लेकिन सी पार्ट में एरर. ठीक है, आपने एक एरर पकड़ लिया, पार्लियामेंट, दैट्स गुड, लेकिन बाकी भी एरर है. जरा पढ़ते हैं क्या है. The president of the opposition party, the sentence which is highlighted, absolutely correct. So the president of the opposition party launched a front attack. Launched a front attack. Attack is a noun. Attack is a noun, and front is also a noun, and attack is a noun. Here we require any word which is a noun, the word which is written before the noun, or it qualifies that particular noun. It means this must be the place of adjective. If it must be the place of adjective, तो इसको हमें adjective लिखना पड़ेगा. That is frontal. FRONTAL, that is frontal. यानी कि पहला एरर मिला आपको स्टेटमेंट नंबर बी में, that is launch a frontal attack on the current prime minister and his government. First error you got in the option number B, accusing them of sabotaging the winter session.
सैबोटेजिंग का मतलब हो गया कि डिस्ट्रॉय कर देना, यानी एक तरह जानबूझकर डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करना। तो विंटर सीजन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफ इज अ प्रपोजिशन, और यहां पार्लियामेंट की बात होगी, पार्लियामेंट्री की बात नहीं होगी। दैट्स व्हाई पार्लियामेंट जो आप लोगों ने पकड़ लिया बहुत अच्छी बात है। ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड्स, यानी कि जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, बाय लॉकिंग द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी किस चीज के जरिए ऐसे कर रहे हैं, फॉर नहीं, उनके लिए नहीं, बाय लॉकिंग द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के टेम्पल, डेमोक्रेसी के मंदिर को बंद करके तब वो ऐसी चीजें करते हैं। फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट हमारे, कहां कहां क्या क्या बोला। द प्रेसिडेंट ऑफ ऑपोजिशन पार्टी लॉन्च अ फ्रंटल अटैक, नॉट फ्रंट अटैक, here we require exactive, that's why frontal attack हो जाएगा, frontal attack on the current prime minister and his government, accusing them of sabotaging the winter session of parliament, not parliamentary, so the parliament on flimsy ground, for nahi hoga, flimsy grounds, by locking the temple of democracy. It means option number B, option number C and option number D, that is option number 3 would be your right answer here, and here you got the answers part of it, and I hope you got it very well. फ्लिम्जी का मतलब इजीली हर्ट हो जाए, वल्नरेबल, फ्लिम्जी मतलब इजीली हर्ट हो जाए, वल्नरेबल। जी अनिशा जी ने आंसर दिया यहां पर, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। स्टिल यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट डाउन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेक इट डाउन। ऑलराइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। All right, time's up. Let's see. दितेश जी आपका कमेंट भी देख रहे हैं, बट आई एम गेटिंग बिकॉज ऑफ, किसी ने लिखा है बिकॉज ऑफ होगा। ओके, स्प्रेड्स, रियान जी का आंसर सबसे पहले स्प्रेड्स आया। ओके, ऑलराइट, चलिए पढ़ते हैं। द लीडर सैट दैट द वर्ल्ड, सेंटेंस पूरी तरीके से ये पास में दिया है, सेट के बाद दैट लगा है। दैट नहीं भी लगा होता तो भी स्टेटमेंट करेक्ट होता है, इस चीज को याद रखना। दैट नहीं भी लगा होता तो भी स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होता। तो अभी तो करेक्ट है। द लीडर स्टार्ट दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, द वर्ल्ड इज फेसिंग इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सम पार्ट्स, सम दिया है विच इज which shows ऐसा एडजेक्टिव है, it means the noun must be in the plural, तो plural दिया some parts, because illegal immigration, जो illegal immigration होता है, यानी दूसरी कंट्री से, दूसरे प्लेस से जो लोग हमारी कंट्री या उनकी कंट्री में जाते हैं, उस illegal migration से क्या होता है, spread terrorism, उससे terrorism बढ़ जाता है, क्योंकि illegal immigration से कोई भी आ जाता है जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, we don't have any kind of data or information regarding that particular person or the people who are immigrating from other countries. So illegal immigration is a noun which is a singular in form, which is singular in form, it means it requires singular verb, that's why spreads यहां लिखना पड़ेगा। ये पहली गलती आपको मिली। spreads terrorism as his country faces, जो लीडर ने कहा जैसे उसकी कंट्री फेस करती है, accusations of violently pushing forward hundreds of thousands of unwanted gentry of people। तो यहां एक और वर्ड आया pushing forward, push forward का मतलब हो जाता है to continue to do work, to continue to act something, बट यहां कंटिन्यू टू एक्ट समथिंग नहीं हो रहा, यहां पुश फॉरवर्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अनवांटेड जेंट्री ऑफ पीपल, यानी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अनवांटेड जेंट्री ऑफ पीपल को यहां पर पुश आउट किया जा रहा है, पुश फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा। वी टॉकिंग अबाउट पुशिंग आउट, नॉट पुशिंग फॉरवर्ड। पुश आउट होगा तब आपका सही आंसर होगा, क्योंकि पुश आउट का मतलब हो जाता है फोर्सफुली किसी को बाहर कर देना। We are talking about the forcefully to that pushing out. So pushing out would be your correct phrase. B and D, that is your right answer. Spreads and out instead of forward, that you need to use here in option number B and D. And I hope you got it very well. चलिए, अमित जी कह रहे हैं सर प्लीज जल्दी पीडीएफ दो। You will get the PDF once the video will be on offline में, don't worry. Alright, comment भी देख रहे हैं, no need to worry about your comment. I'm watching your comment also. Question number 65. Hurry up. टाइम्स अप। चलिए पढ़ लें इसको। ऑप्शन नंबर 2, लकी इज सेइंग ऑप्शन नंबर 2। ऑलराइट लकी, लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 वुड बी राइट आंसर और नॉट। हाई स्टेक्स टॉक्स टू फॉर्म अ न्यू जर्मन गवर्नमेंट, जो हाई स्टेक्स वार्ता हुई
क्या करने के लिए? टू फॉर्म अ न्यू जर्मन गवर्नमेंट। किसी ने टॉक्स लिखा, देखिए टॉक वर्ब होती है लेकिन टॉक्स नाउन होता है, इस चीज को याद रखिए, जो वार्ता होती है दैट इज टॉक्स। ऑलराइट, सो हाई स्टेक्स टॉक्स टू फॉर्म अ न्यू जर्मन गवर्नमेंट कोलैप्स, वो कोलैप्स हो गई ऐसी प्रो बिजनेस एफडीपी पार्टी वॉकआउट, की जब वो वहां से चली गई, वॉकआउट हो गई, वो जो प्रो बिजनेस एफडीपी पार्टी थी। प्लंजिंग यूरोप्स बिगेस्ट इकोनॉमी ऑन अ पॉलिटिकल क्राइसिस, यानी कि यूरोप की जो बड़ी बिगेस्ट इकोनॉमी है उसको पॉलिटिकल क्राइसिस में ढकेलते हुए। प्लंजिंग का मतलब होता है डाइव करना एक तरीके से, है ना, तो किसी भी चीजों के लिए ढकेल देना, दैट इज प्लंजिंग। इनफैक्ट प्लंज के साथ जो आपकी प्रपोजिशन यूज होती है हमेशा इनटू यूज होता है। प्लंजिंग इनटू, जैसे आपने जब प्लंज इनटू द सी, प्लंज इनटू द सी, सी में डाइव करना, तो एग्जैक्टली यहां पर भी होगा प्लंजिंग यूरोप्स बिगेस्ट इकोनॉमी इनटू अ पॉलिटिकल क्राइसिस एंड पोटेंशियली प्रेसिपिटेटिंग द एंड ऑफ द चांसलर्स करियर। सो हियर वी रिक्वायर टू चेंज द प्रपोजिशन दैट इज ऑन, वी नीड टू यूज इनटू हियर बिकॉज प्लंजिंग इज द वर्ड दैट रिक्वायर्स the preposition that is into. Plunging into the sea is the correct phrase that usually very common in our journal language. That's why you need to understand it very well. Plunging into, okay sir, Ramesh ji, very good. चलिए समझ आ गया, that's good. Or only C would be your right answer, into a political that you need to use here because plunging follows the preposition that is into. Move to next question number 66. Hurry up students. ओके, टाइम्स अप। फिर से पढ़ते हैं क्या दिया गया है यहां पर। विद अ 30% इंक्रीज इन एन इंटरनेशनल पैसेंजर्स एट द दिल्ली एयरपोर्ट, विद अ 30% इंक्रीज, 30% इंक्रीज के साथ इन एन इंटरनेशनल पैसेंजर्स एट द दिल्ली, तो हम यहां बात कर रहे हैं इन एन इंटरनेशनल पैसेंजर्स एट दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट में जो इंटरनेशनल पैसेंजर है, पैसेंजर एक की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा की बात हो रही है, 30% इंक्रीज हुआ है पैसेंजर्स में। इट मींस ये आपका प्लूरल ही रहेगा, जो ये एन है ये गलत हो गया। जनरली ये भी हो सकता है कि एन दिया है सर, कि एन दिया है फॉर द व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्टिकल, इफ द आर्टिकल इज इन सिंगुलर लाइक ए और एन दिया हो, इट मींस वी नीड टू रिक्वायर द नाउन व्हिच मस्ट बी इन द सिंगुलर फॉर्म। बट यहां हमें देखना पड़ेगा, यहां 30% इंक्रीज की बात हो रही है, इट मींस नाउन मस्ट बी इन द प्लूरल फॉर्म। इफ द नाउन मस्ट बी इन द प्लूरल फॉर्म, इट मींस वी नीड टू एलिमिनेट दैट इज ए एन आर्टिकल, एन आर्टिकल को यहां से एलिमिनेट करेगा। तो फर्स्ट एरर लाइज इन स्टेटमेंट नंबर ए। Okay, so in international passengers at the Delhi airport in the last 2 years, the government is planning to increase manpower for the immigration desk. The government is increasing, the government is planning to increase manpower. Government plan कर रही to increase the manpower for them, for immigration desk or at the immigration desk. इमाइग्रेशन डेस्क को हेल्प नहीं चाहिए, वहां पर मैन पावर ज्यादा होगी तो वो हेल्प कर पाएंगे, विच हैव बीन विटनेसिंग सर्पेटाइन क्यूज ऑफ लेट, जो लंबी लंबी कतारें लगती हैं वो कम हो जाएंगी इफ वी इंक्रीज द मैन पावर at the immigration desk, not for the immigration desk. And I hope you are getting the point what I exactly want to say here, because here we require to increase the manpower at the immigration desk so that it can be very helpful for delaying, like we are talking about any kind of delay, it will be avoiding in that condition of the queue of late or so much late that we are exactly facing here. So that's why the next error would be here, you need to use the preposition at, not the for. It is very simple error, but at times we get skips from here because it is very simple, that's why it completely disappears from our mind. So A and C would be your right answer and your answers are here it is. All right, and I hope you got it. चलिए सबको समझ आ चुका है, that's good. Question number 67, hurry up. All right, टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका है। किसी ने टू सबमिट लिखा कि टू सबमिट होगा, ओके चलिए कॉमन मैन ने फिर से आंसर दिया यहां पर, शर्वरी जी, रायन जी, शुभम जी, आरती जी, कुरनल जी, चलिए कई लोगों के नाम ले लिए। अब चलिए पढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल pollution control board
for submitting a status report on the sealing of illegal industrial bowels in Ghaziabad and Hapur district. तो हमने देखिए बात करी, सबसे पहले यहाँ डायरेक्ट करने की बात हो रही है, हैज डायरेक्टेड. सो डायरेक्ट किया गया, किस चीज के लिए डायरेक्ट किया? तो एज यू ऑल नो इट वेरी वेल, जैसे किसी ने लिखा टू सबमिट होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. तो फर्स्ट एरर दैट लाइज इन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज to submit. To submit that you need to use here, to submit a status report on the sealing of illegal industrial bowels in Ghaziabad and Hapur district. Here we are talking about two districts, not the one district. If we are talking about the two districts that need to use their districts, it means the district must be in the plural form, district that you need to use. Like when we talk about Lucknow and Delhi cities, not the Lucknow and Delhi city. Yet we are talking about two cities. That's why we need to use the plural form of that particular noun. In such case, as well as we need to use the district in a plural form. That's why you find the two errors is option number B and option number D. That's why B and D, it means option number 4 would be a right answer here, and you got it very well. That I really hope so. Option number 4, all of you have chosen. That's good. Question number 68. Hurry up. टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका है. इसे पढ़ते हैं, क्या दिया है? द यूएस प्रेसिडेंट कॉल फॉर एलिफेंट हंटिंग अ हॉरर शो. द यूएस प्रेसिडेंट कॉल फॉर is a word. In fact, call for is a phrasal verb that shows that I am calling someone, I am shouting, and I'm shouting for any kind of summons. I'm talking about the calling, like मैं किसी को बुला रहा हूं कि यहां आ जाओ भैया. That is call for something, that is call for. और यहां call for उसकी बात नहीं, यहां बुलाया नहीं जा रहा. एक कॉल होता है कि मैंने आपको पुकारा, किस नाम से पुकारा. जब हम किसी नाम से पुकारते हैं तो आप वहां कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करते, यू सिंपली यूज द वर्ड दैट इज CALL, कॉल. तो यहां हमने एलिफेंट हंटिंग को एक हॉरर शो की तरह पुकारा है यूएस प्रेसिडेंट ने. तो सेंटेंस ये कहता है द यूएस प्रेसिडेंट कॉल्ड एलिफेंट हंटिंग अ हॉरर शो. That's why we need to eliminate the preposition that is for. We need to use the preposition for. We need to eliminate the preposition for from here. That's why the correct sentence would be of statement number A. That is the US president called elephant hunting a horror show, and indicating once again call दिया है which is in the second form of the verb. That's why the second जो verb होगी which must be in the same form. So that's why indicating की जगह आपको use करना पड़ेगा indicated. So the US president called elephant hunting a horror show and indicated that he would block imports of elephant trophies from two African nations despite of his administration's earlier approval of the practice. यानी अपने administrations की पहले practice के बावजूद या उससे पहले ही ऐसा काम कर देंगे. So once again one more error that I found here, that is despite of. You need to use in spite of. You have understood about this. In spite of, we need to use of preposition when we talk about the word in spite, but when we talk about the word despite, we need not to use any kind of preposition here because of is already exists in the particular word, that is despite. Despite के अंदर ही in spite of होता है, तो of अगर एक बार और लग जाएगा that would be superfluous for that. it तो superfluous word को भी आपको eliminate करना पड़ेगा. Here you find the error in option number A. You need to eliminate for, and option number B you need to use indicated, and the option number D, that is you need to eliminate of preposition here. So here your answers are, and I hope you got it very well. Yeah, if we use in spite of or we use in despite, we cannot use despite of, that would be wrong answer. All right, and I hope you got it. Om Bikash Mahapatra ji, you are absolutely correct here. Okay, you got it. Chaliye 69. Hurry up. Time's up. चलिए, मैं आंसर लेकिन अभी नहीं मिला मुझे अभी तक आप लोगों का. चलिए आंसर आना शुरू हो गए. फोर्थ ड्राफ्टेड, किसने कहा डिले ऑन. ओके, पढ़ ले रहे क्या. द स्टेट गवर्नमेंट हैज वाइजली ड्रॉप द क्लॉज. स्टेट गवर्नमेंट हैज वाइजली ड्रॉप द क्लॉज
ड्रॉप कर दिया क्लॉज, किस पर ये क्लॉज ड्रॉप किया गया है? ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ऑफ इम्प्रिजनमेंट और ऑन इम्प्रिजनमेंट, of imprisonment or on imprisonment. The state government has wisely dropped the clause. If I have wisely dropped the clause on you, not off you. Getting my point here? I'm not talking about any kind of possession. If I'm not talking about any kind of possession, so I don't need to use of preposition here. That's why of preposition which is written would be absolutely wrong here. You need to use preposition that is on. So the correct sentence would be, the state government has wisely dropped the clause on imprisonment. So the state government has wisely dropped the clause on imprisonment for medical negligence in the final draft. Drafted कई लोगों ने लिखा था, drafted is your verb, you need not to use that. Here we're talking about noun, article that is there, final is an adjective, and you need to use noun, and draft is absolutely correct here. In the final draft of the amendment bill, avoiding a possible delay in, and the rest of the sentence which is highlighted is absolutely correct. That is broadening the scope of the Karnataka Private Medical Establishment Act 2007. That is your right answer here. It means the error lies in option number B. That is only B. Option number 2 is your right answer here. And you got it. Why we need to on use here the preposition? Because you know, preposition is one of the only important or most critical chapters in English language that exactly usually confuses us or perplexing in an examination. But होता क्या है, क्योंकि छोटी छोटी preposition होती है, if we don't concentrately working on that, it means we will definitely skip them. वो skip हो जाते हैं. That you need not to do it. And I hope you got it very well. This is the second last question for you, 69, and the last question, that is 70 for you. Here it is. Hurry up, students. Ayushi ji is saying preposition is very tough, sir. Actually, you know what happens when we talk about a number of things and it comes all together, and when it starts making us perplexing, that's why we feel, yeah, it's very tough. But over the time, if you are working it regularly, you will not face any kind of problem. Still you face some problems, but the most of the problems which you are facing right now, that would be avoidable in that condition if you are practicing a regular basis on that particular topic. So what I can see here, most of you are answering, that's good. A failure of किसी ने लिखा. Okay. Auto and home loans have been seen a marginal increase in the ratio of delinquent accounts. देखिए सबसे पहला सेंटेंस आया, auto and home loans have been seen a marginal increase. इनके ऊपर marginal increase देखा जा रहा है. Auto and home loans have seen a marginal increase. इन्होंने एक marginal increase देखी auto और home loans ने. Here we require the sentence must be in active form. You do not use any kind of be verb here. The correct sentence would be, auto and home loans have seen a marginal increase. It means passive में sentence नहीं बनेगा. Auto and home loans have seen a marginal increase in the ratio of delinquent accounts. अब हमने बात की यहाँ पर delinquent accounts, इस तरीके के accounts जो कि unable है debt pay करने में on time. Alright, which is failure to make timely payment. Failure है which is a noun. Failure है which is a noun. It means it requires an article here. So the correct sentence would be, which is a failure. Which is a failure. It means here you require an article, that is article A. So the ratio of delinquent accounts, which is a failure to make timely payment over the last 2 years. However, gold loans and two-wheeler loans have witnessed a reduce in delinquencies. Our article shows, it means here it requires once again noun. Reduce is a verb and reduction is a noun. That's why reduction that you need to use here. So your answers here it is. You got it very well in option number A. You need to use auto and home loans have seen a marginal increase in the ratio of delinquent accounts, which is a failure to make timely payment over the last 2 years. However, gold loans and two-wheeler loans have witnessed a reduction in delinquencies. And I hope you got it very well. Still, if you face any kind of problem, you can write it down here. So these all are the questions that you completed here. So for today's session, here we have only 70 questions. We will proceed on
in the next session, because I don't think a lot of questions must be done on a single time or a single day. That will create a problem to you guys. And I really wish you all the best for all of you guys who are preparing for IBPS clerk, who have the exam on the 2nd or 3rd of December. Yes, for the next class that would be of tomorrow would be the special class where we will provide you what to attempt and what to skip exactly in your examination, which must be the proper guidance that you need to apply or implement in your examination. What I wish that you can do it, because you have the ability to do it for such a long time, around 1 month. You and we both have been connecting each other, and we are working over your preparation, and you will definitely qualify your examination. That we what assure you here. All right, so we will meet you in the next video. Till then, keep learning and keep practicing, and once again, your English guru signing off. Thank you. But yes, one more thing that you can write it down here, that success is now my duty. Thank you.